will showcase the potential of this sector in our country. We have with us the Union Minister for Shipping, Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji, who will brief you on the highlights of the summit. I extend a warm welcome to you, sir. I also welcome the dignitaries on the dais, Shri Rajiv Kumar ji, Secretary Shipping, Shri Alok Srivastava, Additional Secretary, Shri Arvind Prasad, Director General FICCI, Shri Vinayak Chatterjee, Member CII National Council, and welcome to Shri Barun Mitraji, Joint Secretary. First, the Secretary will make brief introductory remarks. Thereafter, the Joint Secretary, Shri Barun Mitra, will make a presentation on the salient points of the summit. After that, the Minister will address you all. As usual, I request everybody to keep your mobiles either on silent mode or switch off mode. And now I request the Secretary to make his introductory remarks. Honorable Minister Shipping and dear colleagues, esteemed members from the press and media. It's indeed a matter of great privilege for me to talk about the maiden effort which this ministry is making in putting up the Maritime India Summit 2016, the first time in the country. The brief background is that we all speak about the golden heritage in the maritime sector of this country. We have in Lothal a tidal port which is almost 4,500 years old, and all along the coast there have been ports, and along with that prosperity. In the last couple of decades, this old tradition has somewhat faded away. We all would recall that the rivers in the country used to be the lifeline, and the ports are gateway to the world. Efforts have now been made, especially in the last 2 years, to revive this sector and to ensure that the untapped huge potential which is lying in this sector works to the advantage of adding to the GDP of the country. We have had some very good early signs of the efforts which have been made till now. We've invested $2.6 billion in the last 3 years in this sector, and a substantial amount coming from the private sector. The PPP in this sector has been comparatively robust. We've had container trade growth of 6.5%, which is higher than the world average of 5.4%. And last year, we added to the major ports 71 million tons of capacity, which was the highest ever. We also touched 1 billion tons of cargo, which was again a record. Similarly, with the efforts in the inland waterways sector, for National Waterways 1, all the preparatory work has been completed, and in 2016-17, we expect major development on the ground. If we look at the numbers, whether it is coastal cargo, whether it is inland waterways, whether it is the maritime capacity, we have taken a large number of policy decisions over the last 2 years, and some of them have started bearing fruits. It was last month for the first time that the first Ro-Ro vessel, which has started playing as a result of the decision on cabotage relaxation, has taken cars from Chennai to Gujarat. Similarly, there is a vessel which is moving trucks from New Bangalore up to Gujarat.
There is a huge potential of taking cargo, especially coal in large bulk quantities from Orissa to various states for thermal power generation. There is also a whole integrated planning has been done for the first time in the country, where this potential which can be tapped has been done under the National Perspective Plan for the Sagar Mala program, which has been a great vision of our Honorable Prime Minister, who has been the architect of growth and development based on maritime sector in the state of Gujarat, and has given us the encouragement to do the same on the national platform. All these efforts have been feasible because of the enthusiasm and dynamism which our Honorable Minister has been able to impart to all of us and to everybody which has been associated. With this background, we are attempting the maiden Maritime India Summit, and I would now request our Joint Secretary, Mr. Barun Mitra, to make a brief presentation on the summit. With your permission, sir. The Ministry of Shipping has embarked on the maiden initiative of having the first global maritime summit, the Maritime India Summit, with the logo Anchored for Growth. The objective, as Secretary Ministry of Shipping explained, is to showcase the investment potential that the maritime sector across the entire spectrum is there for offer, not only to our domestic investors but also our international investors. Our Honorable Prime Minister is going to inaugurate this summit on the 14th of April. Honorable Prime Minister has envisioned the need of making maritime sector as one of the pillars and as one of the mainstay of the development of country's economy and for generation of employment, because it has a huge potential to generate employment. Taking this cue forward under the able and dynamic leadership of our Honorable Minister, who has already created an enabling environment through policy measures and ease of doing business initiatives, a very, very positive framework for this maritime sector to grow. And it is his idea that we launch this maiden flagship initiative of an international maritime summit. The question is why we need this international maritime summit and why this exposure. As was just now told, India has had a very rich heritage of maritime trade. The rivers were the lifeline of India's economy and trade. We had rivers like Ganga, Brahmaputra, Mahanadi, Godavari, which were playing a very active role in this activity of facilitating trade and commerce. Our ports, Tamralipti, Pumpuhar, Muziris, Calicut, Dwarka,
these have all been very famous, not only for being the gateways of commercial prosperity, but they have also helped in carrying cultural, in fostering cultural relationship with other countries. We've had very strong and vigorous trade relationship with Roman Empire, with North African countries, and also the Southeast Asian countries. But over time, this had become a little more dim, and it is time that we revive the importance of this sector. And this is all the more important because today, India, with its size, is poised to take advantage of the opportunities which are there in the maritime sector, especially with the growth in the global trade, the Make in India initiative, which is going to spur manufacturing. And we have to take the full advantage of lowering the logistics cost through use of water routes, which includes coastal shipping and also the overseas routes. It would also be a successful model for private sector participation. The objective is to create awareness about this immense untapped potential of the maritime sector. Till now, it has been a neglected sector. It has not been talked about much. And for the first time, under the leadership of and constant guidance of our Honorable Minister, that a holistic view has been taken for the development of the maritime sector, including all the niche segments, whether it be coastal shipping, inland water transport, shipbuilding, the importance of improving this cargo mechanization and augmenting the port handling capacity. This summit will also help in showcasing the tangible investment opportunities and attract investors in sectors like greenfield ports, expansion of ports, road and rail connectivity, inland waterways, coastal industrial clusters, and maritime tourism, including lighthouse tourism. The summit will be on the 14th to the 16th April 2016, and it will be inaugurated by the auspicious hands of our Honorable Prime Minister. It will be held in the Bombay Convention and Exhibition Center, Goregaon, Mumbai, and Korea is going to be our partner country. 57 other maritime nations have also been invited to attend the summit, and we have started receiving positive response from many of them. The summit will go on for 2 days, on the 14th and the 15th of the April, where we will have, apart from the plenary session, the thematic sessions, the details of which I'll give in the next slide. We will also have a conclave of the CEOs on the 14th of April, and on the 15th of April, we are going to have a seminar on maritime security, because security is an important aspect of the maritime sector. Besides this, for 3 days, from 14th to 16th, we will have parallelly an exhibition show which will go on, and stalls will be set up both by national corporates as well as international corporates, and we will have also facilities for demonstrating innovative ideas. As I said, this is the program structure. On the first day, we have thematic sessions on Sagarmala initiative, on shipbuilding, ship repair and shipbreaking, maritime education, training and skill development. We will also have partner country special sessions with South Korea, Singapore and Norway, and also the CEOs conclave, where we expect top corporate giants,
both national and international, who will be participating in this. The second day, we have thematic sessions on inland water transportation and coastal shipping, hinterland connectivity and multimodal logistics, opportunities in international shipping and maritime financing, cruise shipping and lighthouse tourism, island development and aquatic resources. And many of the thematic sessions would be chaired by our union ministers and also will be co-chaired by some of the ministers who will be coming from countries abroad. We are going to have the seminar on maritime security on the 15th of April. Besides this, we are going to have focus sessions on maritime states in India so that they can also showcase the opportunities which are available with them where they can attract investment. On both the days, we will have signing of business agreements, letter of intents, and concession agreements. Coming to the opportunities which are available and which we are going to showcase during the summit, one of them is coastal shipping. The cost for coastal shipping when compared to railways and road is much lesser, and there are commodities like coal, cement, petrol, food grains, steel and fertilizers which have significant growth potential of transportation through this mode. There is a potential to lower logistics cost, and it will lead to a saving of about 21,000 to 27,000 crores by 2025. And coastal shipping can also be a catalyst for the coastal industrial clusters, which are being conceptualized and developed under the Sagarmala program. Inland waterways also has a lot of opportunities. It will help in the reduction of logistics cost, and it would relieve the congestion on roads and railways besides easing evacuation. It will help support manufacturing activities in the hinterland states. 4 waterways are already under development: Ganga, Brahmaputra, Mahanadi, and Buckingham Canal. And National Waterways 1 is already in use for coal transport from Haldia to Farakka, and 106 other waterways are also being developed. Why invest in India? We all know that today India is one of the fastest growing large economies in the world. It has a GDP growth rate of more than 7.5%, and while many of the other countries have saturated in their growth or their growth has plateaued, India is still one of the most attractive nations. And as per the UNCTAD report, it is the 4th most attractive FDI destination in the world. We also have a very long coastline of 7,517 kilometers and navigable inland waterways of 14,500 kilometers, which shows the opportunities which are available in the maritime sector for investment and development. And our tonnage of Indian ships has also crossed 10 million deadweight tonnage with potential of more investment. And we are looking at opportunities for investment of about rupees 1.14 lakh crore in inland waterways development and 3 lakh crores in port-led development under Sagarmala. Apart from the opportunities available, there has been a policy environment also which has been created, which is going to help in attracting investment and in the development of the maritime sector. 100% FDI has been allowed through automatic route in port development. 70% abatement has been there in service tax on coastal shipping, and it has been brought at par with rail and road. Infrastructure status has recently been given to the, and we have come up with the financial assistance to shipbuilding yards up to 20% of the
lower of the contract price or the fair price, and that will be available to our private as well as the PSU shipyards. Customs duty and central excise duty on inputs used in shipbuilding and ship repair has also been exempted, and that is to make our shipbuilding industry more competitive. Taxes and duties have been rationalized, and tax holiday has been given for 10 consecutive years for infrastructure development, both in ports as well as shipbuilding. And in cruise shipping, standard operating procedures are being worked out for faster immigration, ports clearance, and customs clearance. The Sagarmala project, which is our flagship initiative, which was conceptualized by Shri Atal Bihari Vajpayee and carried forward by our present Prime Minister, Shri Narendra Modi. And we have the 4 pillars there. One is port modernization, where there are about 50 projects in place. We aim to build new capacity of 1,000 million metric tons, and 6 new mega port locations have been identified, and 90,000 crore investment possibility is there under Sagarmala. In the area of connectivity, there are 75 projects with 10,000 kilometers of new connectivity infrastructure. 7 new dry ports and ICDs are to be set up, and there is an investment opportunity of 1,20,000 crores. Under port-led industrialization, 27 industrial clusters have been identified, and 90,000 crores worth infrastructure investment potential is there. For coastal community development, 10 projects have been identified, which includes development of fisheries, development of skill development, and these are for the coastal community development. Sagarmala, it links its port-led development, and it links the ports and industrialization. If we see in 2015, the cargo at ports is 1050 MTPA, and by 2025 it is expected to reach 2500 MTPA, and 6 new port locations have been identified at Sagar, at Paradeep, the South Satellite Port, near this Machilipatnam and Vodaveru, Inayam, Vadavan, and at Kadalur Sirkazi area. These are the industrial clusters which one was talking about so far as Sagarmala is concerned, and it is primarily in the field of energy, raw material, and other items: steel and cement, advanced industries, gas-based petrochemical plants, apparel, refinery and petrochemical clusters, marine clusters, agro-processing and fisheries, light manufacturing, and automotive and assembly. The investment opportunities under Sagarmala, we have 6 new greenfield ports, 52 new berths in major ports, 70 plus roads, rail and pipeline projects, 7 dry ports, 4 priority inland waterways, 14 energy and material clusters, and 13 discrete clusters, and 17 potential domestic circuits in the sector of marine tourism. During the MIS 2016, as I said, business agreements will be signed on both the days, on 14th as well as 15th, and the major ports and other organizations as well as the maritime states will be signing the business agreements, and the private sector companies will also be announcing their investment plans during these sessions. This is the broad picture of the business agreements which are sealed and which will be signed. It's in the field of port development. There are 41 projects, 17 under port modernization, 11 under port connectivity, 8 under shipbuilding,
port-led industrialization, there are seven under dredging, 7 under inland waterways, new port development, 2 of them, and in coastal shipping, green initiatives, maritime tourism and maritime education, we have 9 projects, and the total investment is going to be rupees 72,000 crores, which will be signed. In addition, as I mentioned, under the Sagarmala, we have more than 150 other projects on which investment opportunities are there on the offer and agreements are to be signed. Our partners in the business summit, we have CII and FICCI as well as Yes Bank. Ministry of External Affairs has been helping us in getting the international delegates as well as the participation of the top leaders from the various nations. And our knowledge partner is Ernst & Young. Thank you. Thank you, Mr. Barun Mitra. Now I request Mr. Arvind Prasad, DG FICCI, to make his brief remarks. Honorable Minister, the Secretary, all the senior officers, friends from media and the industry, it is really very encouraging that the Ministry for the first time is organizing this Global Maritime Summit with such a focused and preparedness where we have the investment opportunities, a specific investment opportunities. We are really very thankful to the Ministry to taking the private sector, making them as an important partner, not only in organizing this summit, but entire investment is planned to be done through the PPP. As you know, the Honorable Minister has a very successful track record of making the large PPP project very successful. You know, in large PPP projects, he understands the strength private sector brings, but also the support private sector needs in executing the large infrastructure project. Though it is being organized for the first time, you have details to the extent of the project, and the investors are really looking forward to this summit where they can identify the projects on which they can work. As you know, in India, as the Secretary mentioned, this investment in maritime will itself will add to GDP. But to make the Indian industry competitive, there are 2 things: ease of doing business and cost of doing business. So infrastructure is a very critical element to the cost of doing business. And this focused efforts on transport infrastructure, shipping, as you heard, movement of car, movement of coal, it will decongest roads and have alternative shipping transport modes. We are really looking forward to, from FICCI and also through Invest India, which is the partner organization of the Government of India. We are working with international delegates, international investors, and I'm quite sure that opportunity will be a huge opportunity for investment in this sector. Thank you. Thank you, Mr. Prasad. Now I request Mr. Vinayak Chatterjee of the CII to make his brief remarks. Good afternoon, everybody. And on behalf of the Confederation of Indian Industry, we are proud and excited about being a partner in the Maritime India Summit. I think what is important for Indian industry, as has been mentioned, is that this is the first time, this is the maiden conference. Across the last 2-3 decades, we have seen enough conferences in engineering, auto, power, roads, many other sectors. But it is strange that it is in 2016 that we really have the first Maritime India Summit, and this is very, very timely for India. There are 3 clear reasons why we are enthusiastic and excited. One is we are, as Indian industry, we are extremely concerned about our competitiveness in a global scenario. And we feel that now the attention that is being given to the logistics side of moving goods inward and outward, both international and domestic, is very, very timely, because the entire, the business war is going to be won or lost on the cost effectiveness of logistics. So we are extremely happy that this entire area, not just of international trade, but coastal trade and inland waterways, is finally getting the due attention.
The minister himself has repeatedly said at various conferences that it is most expensive to move goods by road, then by rail, and finally by water. So water gets its, for the first time, its just place. That's reason number one, cost of logistics. Second is, as already mentioned by my colleague from FICCI, is the whole business of attracting private capital. PPP has been a game which has received at different points of time great excitement, and at different points of time great withdrawal symptoms. We have seen that in the road sector, the minister has actually been able to whip back the appropriate PPP models by innovative schemes like hybrid annuity, TOT, toll operate, terminate, etc. So he understands the businessman's point of view on getting capital in a friendly, attractive regime. So we are excited about the fact that much of the investments that are going to be called for under his leadership and under the leadership of the Ministry of Shipping will be in friendly, practical and fair PPP schemes. And that is what Indian businessmen and the foreign businessmen who are going to come are going to look forward to. And my last point is this whole exciting area of coastal economic zones. We have seen in India that the thrust some time back of special economic zones has really not taken off in the manner that citizens of the country thought it would take off. We now have the prospects of another movement which is going to be linked to inland and international shipping, going to be linked to the logistics, is this whole area of port and port-led economic activity, both in terms of manufacturing, trade, and social infrastructure. So we are excited about the prospects of this concept of coastal economic zones, and therefore, to sum up, logistics, friendly formats for attracting private capital, and pushing the concept of coastal economic zones, and the thrust on international, coastal and inland is something which is very, very exciting for Indian industry, and we in CII are going to be quite involved both on the exhibition side as well as on the conferencing side, and we seek your good wishes. Thank you, Mr. Chatterjee. Now I request the Honorable Ministers to make his remarks. हमारे देश में जो हमारा जीडीपी है उसमें 8 से 12% एग्रीकल्चर से है, 22 to 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है और 52 to 56% सर्विस सेक्टर से है। हमारी सरकार ने यह टारगेट निश्चित किया है कि आने वाले समय में देश के विकास के साथ देश में रोजगार का निर्माण हो, और इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब तक नहीं बढ़ता तब तक हमारे देश का जीडीपी नहीं बढ़ सकता। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ने में जो अड़चनें हैं उसमें हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 18% है। कोई मटेरियल मुंबई से दिल्ली लाना महंगा भी है और कठिन भी है, पर मुंबई से लंदन भेजना आसान है और सस्ता है। और इसलिए चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो 8 to 10% है, और यूरोपियन देशों में ये 10 से 12% है, और भारत में ये 18% है। और इसलिए अगर हम लोग वाटरवेज को और पोर्ट को डेवलप करेंगे तो हम लॉजिस्टिक कॉस्ट कम कर सकेंगे। जैसे रोड पे जाने के लिए अगर 1.5 रुपये खर्चा लगता है, रेलवे से जाने के लिए 1 रुपया लगता है, तो पानी पर जाने के लिए 25 पैसे लगता है। और जो हमारे पोर्ट्स है उसके बाजू में ही अगर डेवलपमेंट होगी, इंडस्ट्री होगी, और वाटर पोर्ट्स के बाजू में गोडाउन्स होंगे, प्रीकूलिंग प्लांट होंगे, कोल्ड स्टोरेज होंगे, तो हम लोग लॉजिस्टिक कॉस्ट में करीब 4 से 5% अगर कम होंगे तो हमारे देश का एक्सपोर्ट दुगना हो सकता है। और इसलिए जब तक हमारी वाटरवेज डेवलप नहीं होंगे, कोस्टल ट्रैफिक डेवलप नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब जिस देश की प्रगति हुई है, जहां पोर्ट डेवलप हुए हैं, वाटरवेज डेवलप हुए, उन्हीं देशों की प्रगति हुई है जो दुनिया में पहले क्रमांक पर पहुंचे हैं। दुर्भाग्यवश वाटरवेज में, पोर्ट्स में, शिपिंग में हम दुनिया में लगभग आखिरी नंबर पर हैं। और इसलिए हमने ये तय किया है कि आने वाले समय में हम 40 लाख डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 5 साल में क्रिएट करेंगे और 60 लाख इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। और हमारी सरकार की सबसे प्राथमिकता यही है कि हम लोग ये रोजगार कैसे निर्माण करें। और इसके लिए ये जो सागरमाला है, इसका फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान और जो है वो आपके सामने रखा हुआ है।
पर मैं थोड़ा सा अभी तक हमने जो काम कर रहे हैं और जो तय किया है उसकी जानकारी आपको दूंगा। हम वाधवान में 20 मीटर का ड्राफ्ट है, वहाँ 10,000 करोड़ का फेज़ 1 बड़ा पोर्ट बना रहे महाराष्ट्र में। कोलाचल में 20 मीटर का ड्राफ्ट है, वहाँ करीब 7,000 करोड़ का फेज़ 1 पोर्ट वहाँ बना रहे। और सागर में 4,500 करोड़ है, जहाँ रोड रेल ब्रिज के साथ हम लोग ये पोर्ट बना रहे बंगाल में। तीनों को लगभग क्लियरेंस हुआ है, 2 का कैबिनेट अप्रूवल भी बाकी है। हमारी सरकार आने के बाद जब हमने प्राथमिकता दी, क्योंकि हम जब बड़ी बड़ी बातें आपके सामने रख रहे हैं तो हमारे 1.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी आपके समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 27 प्रोजेक्ट्स जिसकी इन्वेस्टमेंट 12,700 करोड़ रुपए है और जिसके कारण 116 MTPA ये इसमें हुआ है। ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए हैं। इन प्रोजेक्ट के नाम है JNPT में हमने 2,787 करोड़ का 8 लेन रोड का काम शुरू किया है। पैरादीप पोर्ट में मैकेनाइजेशन ऑफ कोल बर्थ 1,633 करोड़। मुंबई में 5th ऑयल बर्थ रुपीज़ 811 करोड़। कांडला कंटेनर टर्मिनल 263 करोड़। कलकत्ता FSRU 3,500 करोड़। इन्नौर कैपिटल ड्रेजिंग 425 करोड़। पैरादीप LPG टर्मिनल 690 करोड़। न्यू मंगलर मैकेनाइजेशन 470 करोड़। गोवा ड्रेजिंग 191 करोड़। ऐसे हमने 27 प्रोजेक्ट 12,696 12,700 करोड़ रुपए के ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। जो 31 मार्च के पहले हम प्रोजेक्ट अवार्ड करेंगे वो 15 प्रोजेक्ट्स है, जिसमें 6,700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। गोवा कन्वर्शन ऑफ आयरन ओर बर्थ टू मल्टीपर्पज रुपीज़ 1,100 करोड़। इन्नौर ऑयल टर्मिनल रुपीज़ 700 करोड़। इन्नौर कैपिटल ड्रेजिंग रुपीज़ 600 करोड़। हल्दिया फ्लोटिंग फ्यूल फैसिलिटी 460 करोड़। मुंबई FSRU रुपीज़ 2,740 करोड़। यानी 6,700 करोड़ के प्रोजेक्ट 31 मार्च के पहले हम अवार्ड कर रहे हैं। प्रोजेक्ट जो कंप्लीट कर रहे हैं 32 प्रोजेक्ट, जिसमें 4,351 करोड़ रुपए की हमारी इन्वेस्टमेंट है और कैपेसिटी है 70 MTPA। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट अंडर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 46 प्रोजेक्ट्स है, जिसकी इन्वेस्टमेंट है 28,040 करोड़, जिसमें कैपेसिटी ऑफ 307 MTPA बढ़ने वाली है। ये टोटल इन्वेस्टमेंट 67,772 ये हमारी सरकार ने ही ये 2 साल हमको पूरे होने इसके पहले ही शुरू कर दी है। इसमें से कुछ काम हुआ है। प्रोजेक्ट विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,20,000 करोड़ हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर मैरिटाइम इन्वेस्टमेंट समिट जो होने वाला है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हमारे पोर्ट सेक्टर में हमने जिस प्रकार से ये सब इनिशिएटिव लिए हैं और उसमें अभी बहुत कुछ काम होना बाकी है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि हमारे जो 12 मेजर पोर्ट है और 3 हमारी मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन है, कोचीन शिपयार्ड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये 15 इंस्टीट्यूशन का इस साल का प्रॉफिट 6,000 करोड़ से ज़्यादा है। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि हमारी 15 की 15 ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में है। और इसके साथ साथ ये नई इन्वेस्टमेंट्स है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत बड़े प्रमाण पर बूस्ट मिलेगी और उसके कारण रोजगार का निर्माण होगा। आपको पता ही होगा कि हमारे पास 13 स्टेट ऐसे हैं जिसके पास समुद्र किनारा 14,000 किलोमीटर का है और अभी हमने 111 वाटरवेज को इनलैंड वाटरवेज में कन्वर्ट करने का बिल शायद आज राज्यसभा में आज मंजूर होगा। आज मैं उसके ऊपर बिल रखने वाला हूँ। और 5 हमने ऑलरेडी दिए, से 116 वाटरवेज और कोस्टल ट्रैफिक को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो देश में रिवोल्यूशनरी चेंज होगा। जो विशेष रूप से बातें बताई गई है उसमें से उनको मैं रिपीट नहीं करूँगा। हम स्मार्ट सिटी पोर्ट पे जगह बना रहे हैं जहाँ लो कॉस्ट हाउसिंग होगा, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर होगा। कलकत्ता आपके हल्दिया पोर्ट में हमने बायोडीजल पर इंजन चलाया रेलवे का, जो पोल्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो परिस्थिति में हमारे डेवलपमेंट के कारण जो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो 18% है वो अगर हम 5% कम हो जाएंगे
तो हमारा एक्सपोर्ट दुगना होगा और इंडस्ट्री सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो काफ़ी बढ़ेगा और जिसमें देश में नए रोजगार का निर्माण होगा और देश का जीडीपी उसमें बढ़ेगा। और इसीलिए हमने ये नम्रतापूर्वक कहा है कि आने वाले 2 साल के बाद हम जिस प्रकार से ये सब काम कर रहे रोड सेक्टर में, शिपिंग में, पोर्ट्स में, इनलैंड वाटरवेज में, इसका इफेक्ट जो होगा वो कम से कम 2% जीडीपी इस देश में हम बढ़ाएंगे और करीब आने वाले 2 साल में जो रोड सेक्टर में और बाकी सेक्टर में हम काम कर रहे हैं उससे एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल कम से कम 50 लाख युवाओं के लिए निकलेगा। जब 5 साल में यह कार्यक्रम हुआ तो ये एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल और बढ़ेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। तो रोजगार निर्माण करने वाली अर्थव्यवस्था के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना है। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल उसके सिवा नहीं बढ़ेगा, गरीबी उसके सिवा दूर नहीं होगी और देश का विकास नहीं होगा। और इसीलिए ये मैरीटाइम इंडिया का जो समिट है इसमें बड़े प्रमाण पर विदेशों से नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, हम लोग कैटरमैरन, हावरक्राफ्ट, सी प्लेन इसको इनकरेज करें, क्रूज को ला रहे हैं देश में ताकि टूरिज्म को बढ़ाए और अलग अलग प्रकार की नए नए इनोवेशन को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। बीच में आपने देखा होगा कि चेन्नई से हमारी कार्स जो है उसका ट्रांसपोर्ट हमारे शिप के द्वारा हुआ। ऐसी धीरे धीरे अनेक इनोवेशन हम ले रहे हैं, उन सेक्टर की समस्याओं को हम लोग समझ रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है, जैसे रोड सेक्टर में बहुत बड़े प्रमाण पर रोड सेक्टर की एक समय कंपनियां अड़चन में थी, वैसे शिपिंग सेक्टर में भी बहुत बड़े प्रमाण पर बहुत सी कंपनियां, 27 शिपयार्ड इस देश में बहुत अड़चने हैं, समस्या फेस कर रहे हैं। उनका बैंकों में करीब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा कैपिटल है और जो आज बहुत ही अड़चन की स्थिति में है, स्ट्रेस हुआ है। और इसलिए हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ये इस सेक्टर को हम लोग कैसे मदद करें, ये सेक्टर भी दौड़े कैसे, आगे कैसे आए और इस देश का प्राइवेट सेक्टर हो, हमारा गवर्नमेंट का सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, सब मिलकर एक ग्रोथ रेट बढ़े, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़े और देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करें। और इसके लिए मैरीटाइम इंडिया का जो समिट है जिसमें इंटरनेशनल अनेक देशों से इन्वेस्टर भी आ रहे हैं, सीईओ की कॉन्फ्रेंस है, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री भी हमें इसमें सहयोग कर रही है, देश के जो हमारे इस सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनको भी हमने इसमें कॉन्फिडेंस में लिया है। और विशेष रूप से जो हमारे 13 स्टेट्स हैं जहां कोस्टल स्टेट्स है वहां भी हम लोग उनको भी आह्वान कर रहे हैं। और इस सब करते समय 10 लाख फिशरमैन ऐसे हैं जो कोस्टल एरिया से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग पोर्ट लेड डेवलपमेंट में जो वहाँ की सोसाइटी है उसके डेवलपमेंट का भी प्लान हमने बनाया है। लो कॉस्ट हाउसिंग का होगा, फिशरमैन के लिए फिश के लिए कैसे काम कर सकते उसका होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ हमने कोऑर्डिनेट किया है। और इसलिए एक देश के बहुत पहली बार देश के इतिहास में ये मैरीटाइम समिट हो रहा है। पहली बार हमारी सरकार ने इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है। एक बात जरूर है कि जहाँ समुद्र नहीं है वहाँ के लोगों को इसकी जानकारी और पोटेंशियल की जानकारी उतनी हम दे सके जितना अभी नहीं है। ये बहुत बड़ा ताकत वाला फील्ड है और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि इसको हम सबसे प्रायोरिटी देंगे रोड सेक्टर और रेलवे सेक्टर से। और इसलिए आपसे सहयोग है कि आपके मार्फत इसकी जानकारी नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर लोगों तक पहुंचाने की आप सब लोग कृपा करें। और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बीट के जो दिल्ली के पत्रकार हैं उनको भी इस कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग मुंबई के लिए आमंत्रित करते हैं, उनको भी हम लेके जाएंगे। और निश्चित रूप से आने वाले देश के इतिहास में ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा और इसमें आप सब लोग सहयोग करिए, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। Thank you, sir. We'll take a few questions. If you have any, please raise your hands. Okay, we'll start with 53. गडकरी जी, बिहार सरकार ने इलाहाबाद हल्दिया प्रोजेक्ट पे ऑब्जेक्शन किया है। अभी तक तो इलाहाबाद बिहार सरकार के इसमें से हमने ऐसा कोई ऑब्जेक्शन करने वाला काम ही अभी किया नहीं है। हम एनवायरनमेंट को अच्छा कर रहे हैं और कोई राज्य सरकार के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। उल्टा हम लोग साल भर गंगा में अगर पानी रहेगा 3 मीटर का तो नेविगेशन के साथ किसानों को पानी मिलेगा, उसके साथ फिशरमैन के लिए फिशरीज का काम होगा और वही रोरो सर्विस पटना में भी शुरू करने का प्लान है। उससे ट्रांसपोर्ट आसान होगा, कॉस्ट कम होगी। और इन्वायरमेंट से और सभी मिनिस्ट्री से सब प्रकार के क्लियरेंस करके हम कर रहे हैं
अभी तक बिहार सरकार से उनके विरोध के बारे में हमें कोई चिट्ठी तो मुझे नहीं मिली है, फिर भी मुझे लगता है कि ये तो बिहार सरकार और बिहार की जनता के इंटरेस्ट के लिए है और निश्चित रूप से उनका सहयोग हमको मिलेगा। नितिन जी, ये बिजनेस के लिए ये आपका मेरिन है, ये आप भारत की जीडीपी में ग्रोथ करेंगे इन प्रोजेक्टों को बनाने के बाद, लेकिन जो प्राइवेट मेरिन हैं, जो प्राइवेट लाला हैं, उनसे आपका संस्थान किस तरीके से मुकाबला करेगा, किस तरह की अवसर आप उनको प्रदान करेंगे? दूसरा, जब इस तरह का टूरिज्म बढ़ेगा भारत के चारों तरफ सागर के, तो उसमें सिक्योरिटी रीजन के लिए आपका मंत्रालय क्या कर रहा है? क्योंकि अभी आतंकवादी हमला जो हुआ था मुंबई में, वो समुद्र के रास्ते ही हुआ था। तो इस मामले पे आपका विचार गृह मंत्रालय के साथ कैसा तालमेल हो रहा है, या आप इस पर कोई और काम करेंगे? देखिए, कोस्टल सिक्योरिटी गार्ड जो हमारा होम मिनिस्ट्री के अंडर है, उनकी ये जिम्मेदारी है। हमारा उनका कोऑर्डिनेशन भी होता है और जो हमसे सहयोग मांगते हैं वो भी हम उनको देते हैं, और बेसिक जिम्मेदारी उनकी है। दूसरी बात जो है कि इस सेक्टर में इतना पोटेंशियल है कि इस सेक्टर में जो भी कोई आए उसको काम करने का अवसर है, और इसमें अनेक प्रकार की आइडिया है। बीच में मैंने बताया था कि मैरिज भी पानी पर हो सकता है, टूरिज्म भी हो सकता है, कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। तो ये अनेक प्रकार के इनिशिएटिव हम ले रहे हैं। फ्लोटिंग होटल्स हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि रोजगार कैसे निर्माण हो, और इसलिए सरकार के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, पब्लिक सेक्टर के द्वारा हमारे देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार कैसे मिले, ये देश की सबसे बड़ी समस्या है। और इसलिए हमें ऐसी इकोनॉमी चाहिए जो रोजगार की निर्मित करे, और दूसरी ओर हम इतनी इफिशिएंसी बढ़ाएं कि हम लोग प्रोफेशनली सक्सेसफुल हो। जैसे आज उदाहरण हुआ है कि हमारे यहाँ एक प्राइवेट की पोर्ट की कंपनी है बड़ी, उनका प्रॉफिट कम हुआ है और हमारे कांडला पोर्ट का प्रॉफिट बढ़ा है। हमारा टर्नओवर बढ़ा है, हमारी इफिशिएंसी बढ़ी है, और हमने उनसे भी ज़्यादा अच्छा काम किया है। तो निश्चित रूप से कंपटीशन है, प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकता है और वो भी कर सकते हैं, और हम किसी लाला को मदद करने का ऐसा कोई काम नहीं करते। यहाँ ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ टेंडर निकलते हैं, ई टेंडर के बिना कोई काम नहीं होता। यहाँ लाला, बाला, आला, काला सब दे आर ओपन फॉर ट्रांसपोर्ट कंपटीशन, और जो भी आना चाहते हैं उनको काम मिलेगा। Yeah, Babul, you want to ask? Yeah. गडकरी जी, हल्दिया से पटना और पटना से बनारस का जो योजना आपका है जलमार्ग वाला, कब तक चालू हो जाएगा? उसको कोई डेडलाइन है क्या? अभी हल्दिया से वाराणसी तक टोटल 1620 किलोमीटर है। उसमें 3 मल्टी मॉडल हब बन रहे, वाराणसी, हल्दिया और साहिबगंज। 5 रोरो सर्विस शुरू हो रही, जिसमें पटना है, ये तीनों कलकत्ता है, हल्दिया है, और एक बिहार का भागलपुर, वो उसमें है। दूसरा, हमने ऑलरेडी 4000 करोड़ के टेंडर निकाले हुए हैं। लगभग मार्च के पहले सब जगह काम शुरू हो रहा है। फरक्का के जो वाटर गेट को रिपेयर करने का भी टेंडर निकल गया है, और मुझे लगता है कि दिसंबर तक इसमें काफ़ी हलचल आपको दिखेगी। और कोल मूवमेंट के बारे में भी हम लोग कोशिश करें कि यहाँ 13 पावर प्रोजेक्ट आते हैं, तो कोल मूवमेंट इसमें हो। दूसरी ओर फराक्का की फ्लैश बांग्लादेश तक यहाँ से जा रही है, और इसका ओपनिंग इस साल दिसंबर तक बहुत सा काम शुरू हो जाएगा। और जो 4000 करोड़ के हमने टेंडर निकाले हैं, वो मार्च एंड के पहले, अभी इसी मार्च एंड के पहले काम शुरू हो जाएंगे। या दीपक, सर, एक जो बड़ी पॉइंट बार बार आता है कि टर्न अराउंड टाइम जो है आपका पोर्ट में, और जो इवैक्यूएशन ऑफ ट्रैफिक, दिस इज द 2 मेजर थिंग्स, उसके बारे में एग्जैक्टली आप लोग क्या प्रयत्न कर रहे हैं? देखिए, हमारा इसमें परफॉर्मेंस पहले बहुत ही बुरा था, पर हमने इंटरनेशनल कंसल्टेंट को हायर करके जो हमने 104 सुझाव उन्हें दिए, उसमें से हमने मेजॉरिटी सुझाव इम्प्लीमेंट किए, और उसी का परिणाम ये हुआ कि हमारी पोर्ट की इफ़िशियंसी बढ़ी। और अगर जब ये प्रेजेंटेशन हमारे सेक्रेटरी हर महीने में उसका ऑडिट करते उस पूरे सिस्टम का, अब उसमें ये हुआ कि हमारा टाइम कम हुआ। तब उसमें कंपैरिजन इंडियन पोर्ट में किया था, तो मैंने कहा इसको मत करिए। जैसे मैं एवरेज टर्न ऑन टाइम इन डेज 2012 में 2.55 था, 2013-14 में 2.25 था, 2014-15 में 2.13 था, और 15-16 में जनवरी तक ये 2.4 आया है। प्री बर्थिंग डिटेंशन ये 2012-13 में 12.17 था, 2013-14 में 6.94 आया, 14-15 में 6.1 आया, और 15-16 में 3.89 आया।
देखो कितना बड़ा बदला है। शिप बर्थ डेज आउटपुट 2012-13 में 11,800 था, 13-14 में 12,468 हुआ, 14-15 में 12,523 हुआ और 15-16 में जनवरी तक ये 12,922 हुआ। ये जनवरी तक ही हुआ है, आगे बढ़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मैंने अभी बताया कि ये हम लोग इस साल मोर देन 6,000 करोड़ हमारा सब पोर्ट और ये बल्कि मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। मैं थोड़ा सा आपको कहूँगा कि आप रोड को तो बहुत देखते हो, पर आप ये रोड की तुलना में ये हमारे शिपिंग मिनिस्ट्री ने पोर्ट ने किया हुआ काम बहुत हिस्टोरिकल और रिमार्केबल है। पर दुर्भाग्य ये है कि यहाँ दिल्ली में कोई पोर्ट दिखता नहीं, कोई जहाज दिखता नहीं, तो इसका इम्पोर्टेंस आपको समझाने में हम कम पड़ते हैं। पर ये देखिए, आपको उदाहरण बताता हूँ कि अगर हल्दिया में अगर एडिबल ऑयल इंपोर्ट होके आता है और वो ऑयल अगर रिफाइनरी उसकी हल्दिया के बजाय साहिबगंज में होती है और वो पूरा ऑयल 5,000 टन के बार्ज में अगर वहाँ आता है, तो आपको पता है कि झारखंड में खाने के ऑयल की कीमत 1 रुपये किलो कम हो जाएगी। वो अगर वाराणसी आएगा तो 1.5 रुपये किलो कम हो जाएगी, क्योंकि जो ट्रक से टैंकर आता है उसके बजाय बाहर से आएगा तो कम हो जाएगी। अभी तुअर की दाल है, आपको देश में इंपोर्ट हो रही है, अगर ये यहाँ अगर आएगी तो उसके रेट जो है 3-3, 4-4 रुपये किलो कम हो जाएंगे। तो ये लोगों को फायदा होगा। भले आपके पास समुद्र नहीं है, नदी नहीं है, पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अगर किसी चीज़ की कम होती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है, तो अल्टीमेट दिल्ली का माल भी कम होगा ना, यहाँ के महंगाई कम होगी, तो इसका फायदा सबको होगा। या अनुज सर, चूंकि राज्यों से इसका संबंध है सर, किन किन राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें आ रहे हैं? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि 14 अप्रैल के आसपास केरल, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, उसमें विधानसभा के चुनाव हो रहे होंगे, शायद वहाँ के सीएम ना आ पा रहे हैं। हमने कोस्टल से रिलेटेड जो राज्य है उनके सभी मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आने का कंफर्म किया है और हम सबको हमने आमंत्रित भी किया है, वो उनके सेशन में शरीक भी होंगे। Any more questions? No more questions. Thank you, sir. Thank you very much, sir. One more last question. Okay, you raised it. I didn't see it. First of all, congratulations on this initiative. बहुत अच्छा initiative है, मैं बधाई देना चाहती हूँ आपको। And जो coastal shipping ला रहे हैं, which will reduce logistics cost, that is also a great initiative. I think it will help the economy to a great extent. मेरा जो सवाल है that pertains to women in shipping, sir. I am myself employed in the logistics industry for last 13 years, and since I started my career, अब तब से लेके अब तक the number of women in shipping is increasing, no doubt, but अब भी वो एक minority है shipping industry में। तो मुझे ये पूछना है that does the ministry have any plans to engage corporates to bring more women in the industry? उसमें हमारी मैरिटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई में है। अब उसके लिए हमने रत्नागिरी में, महाराष्ट्र में उसकी सब ब्रांच खोल रहे हैं और पोर्ट से, शिपिंग से और इनलैंड वाटर में से भविष्य में जो डेवलपमेंट हो रही है उसको लगने वाली जो स्किल्ड मैन पावर लगेगी, उसके कोर्सेज, उसके डिग्री कोर्सेज डेवलप करने का भी काम हमने शुरू किया है। उसकी एक कमेटी भी अपॉइंट की है और उसमें लड़कियां भी काफ़ी बड़े प्रमाण पर हैं। और आपकी जो सुझाव है कि इस सेक्टर में हम लड़कियों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उनको भी प्रायोरिटी देंगे, उनको भी हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। गडकरी जी, आखिरी क्वेश्चन हमारा ही है।